Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Welcome to this Monday edition of Market Mantra, the program in which we give you a complete update on the economic news of the day. And today listeners will be taking calls from you as well on any queries that you may have on economic, business and stock market news. But do remember that we do not address company-specific queries. You can call us on 2331 4444, 2371 7106 and 23421050. And remember, for listeners who are calling us from outside Delhi, you will have to prefix the Delhi STD code 011 before these numbers. I am Anubha Rohatgi and with me is my co-anchor in Hindi, Vibhuti Mishra. नमस्कार, मार्केट मंत्र में आपका स्वागत है। हम ताजा आर्थिक खबरें आप तक लाएंगे। आज सोमवार है और हम आपके सवाल भी सीधे कार्यक्रम में शामिल करेंगे। आर्थिक, व्यापारिक और शेयर बाजार से जुड़े किसी भी विषय पर आप प्रश्न पूछ सकते हैं। यहाँ बता दें कि कार्यक्रम में किसी कंपनी विशेष या स्टॉक के बारे में जानकारी नहीं दी जाती है। हमारे 3 टेलीफोन नंबर्स हैं 2331 4444 2371 7106 और 23421050 पर फोन करके आप सवाल पूछ सकते हैं। दिल्ली से बाहर के श्रोता इन नंबरों से पहले 011 अवश्य डायल करें। सवालों के जवाब देने और चर्चा के लिए स्टूडियो में आमंत्रित हैं सीनियर मार्केट एक्सपर्ट शरद कोहली। शरद जी नमस्कार, स्टूडियो में आपका स्वागत है। नमस्कार विभूति, नमस्कार अनुभा और सभी श्रोताओं को मेरा दिल से अभिनंदन। और सबसे पहले हेडलाइंस के साथ हैं अनुभा रोहतगी। Thank you, Vibhuti. Prime Minister Narendra Modi stresses on good governance for success of government schemes to reach the last mile, inaugurates Shivamogga Airport and lays foundation of multiple development projects in Karnataka. 2-day inception meeting of Women 20 Engagement Group under India's G20 presidency begins in Maharashtra, and domestic stocks witness losses amid mixed global cues. Sensex closes below the 59,300 mark, Nifty settles below the 17,400 level. देश के हर नागरिक तक सरकारी योजनाओं के लाभ सफलतापूर्वक पहुंचाने के लिए पीएम मोदी ने दिया सुशासन पर जोर। पीएम ने कर्नाटक में शिवमोग्गा एयरपोर्ट का किया उद्घाटन और विकास की कई परियोजनाओं की आधारशिला भी रखी। भारत के G20 की अध्यक्षता के तहत विमेन 20 एंगेजमेंट ग्रुप की 2 दिवसीय स्थापना बैठक महाराष्ट्र में शुरू। और मिले जुले वैश्विक संकेतों के बीच घरेलू शेयर बाजार में गिरावट। सेंसेक्स 59,300 अंक और निफ्टी 17,400 स्तर के नीचे बंद। Prime Minister Narendra Modi has highlighted that good governance is the most essential condition for the success of government works and schemes, and reaching the last mile is the only possible way through it. Addressing a post-budget webinar on reaching the last mile today, Mr. Modi said the more emphasis one puts on good governance, the more easily the goal of reaching the last mile will be accomplished. He gave the example of new approaches in the immunization and vaccine coverage in Mission Indradhanush and COVID pandemic to illustrate the power of good governance in the last mile delivery. Mr. Modi said that along with money, political will is needed for the development. Explaining the thinking behind the policy of saturation, the Prime Minister said that the approach of reaching the last mile and saturation policy complement each other. He said, as opposed to the earlier scenario when the poor were running after the government for basic facilities, now the government is reaching the doorstep of the poor. The Prime Minister stressed on the need to take the mantra of reaching the last mile in the tribal and rural areas of the country. He said the whole of the nation approach is needed to rapidly provide facilities under special mission for the most deprived among the tribal community. He said the government is trying its best to tap the vast potential of the country's tribal people, and this year's union budget has been devoted to tribal development. Mr. Kohli, a very important post-budget webinar today. It's one of the series of post-budget webinars that the government has been holding, and a very important issue at under discussion today, reaching the last mile delivery, especially given the fact that rural and major portion of our rural and tribal population are very often deprived of it.
Absolutely, Anubha, because the announcements made in the budget, they are in the form of policy, and they are all big announcements with a lot of money at stake. But when a common man, used to listen to those announcements, it always crossed their minds that, how will this reach us? Will it ever reach us? And the fact of the matter is that if we talk of 8-9 years before, announcements were leftist announcements, and they never used to trickle down to the last man in the queue. So I think the object of the webinar was to try and convey that times have changed now. We have moved to a very technologically advanced governance. There is direct benefit transfer. There are so many things, take for example today's transfer to the farmers. Now, it was probably a few years ago, it was thought impossible if money can reach those small farmers into their bank accounts while they are probably working in the field. They get a message on their mobile phone that here is the money. So I think the emphasis on last mile was made in the webinar, that it's not that the announcements remain to the files, they remain on policy tables. They actually go down to the grassroots level, and that's the beauty of governance, if I say summarily. And we have been joined now by our first caller of the day, Mr. Kashinath from Chennai. Mr. Kashinath, welcome to Market Mantra. Please ask your question. team. जी, please ask your question. मेरा क्वेश्चन जी, पहले 2 क्वेश्चन है. फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि जो आधार और पैन लिंक होता है वो 31 मार्च 2023 लास्ट डेट है. अगर कोई लिंक, और पेनाल्टी 1000 रुपीज है, अगर कोई लिंक नहीं करेगा तो क्या उसका पैन तो इनवैलिड हो जाएगा? फिर उसका बाद क्या वो नया पैन के लिए अप्लाई करेगा? इसका बारे में थोड़ा जानकारी दीजिएगा. नंबर 2. जी, काशीनाथ जी, बहुत अच्छा सवाल है. और बहुत सारे ऐसे लोग, ये पैन और आधार की जो लिंकिंग थी, अनुभा और विभूति, ये ऐसी शादी थी जो टलती रही, कई तारीखें निकली इसकी, और अनेकों बार इसको मौका दिया गया लोगों को. पर कुछ लोग हमेशा ऐसा देखा गया हमेशा ही रह जाते हैं जो कि नहीं लिंक कर पाते हैं. जी हाँ काशीनाथ जी, आपने बिल्कुल ठीक पकड़ा है. 1000 रुपए पेनल्टी है, पर पेनल्टी के साथ भी हम तो यही सलाह देंगे कि लोग लिंक करा लें. और मान लीजिए आप फिर भी नहीं करा पाते, हालांकि मैं नहीं समझता कि आज इस मार्केट मंत्रा में जिक्र करने के बाद फिर भी कोई ऐसा क्यों करेगा कि वो ना लिंक कराए. पर मान लीजिए ऐसा होता है तो आपने बिल्कुल ये भी ठीक पकड़ा कि उसका पैन इनवैलिडेट हो जाएगा. उसमें काशीनाथ जी क्या होगा कि आपका, क्योंकि जो इनकम टैक्स का असेसमेंट है, मान लीजिए मैं उदाहरण देता हूं, कोई रिफंड आना है तो वो रिफंड नहीं आ पाएगा क्योंकि आपका तो पैन ही वैलिड नहीं होगा. मान लीजिए आपका कोई केस चल रहा है, वो केस भी नहीं हो पाएगा. और जहां जहां आपने पैन कोट किया हुआ है, बहुत सारे आजकल तो सेवाएं हैं जहां पर पैन चाहिए, बैंक अकाउंट है, और मैं अगर लिस्ट गिनाऊं तो शायद बाकी का कार्यक्रम उसी में निकल जाए. Most of the government services and all ask you to link your PAN. Absolutely, because तो इसलिए वो सब में दिक्कत आ जाएगी. ये बात आपकी सच है कि इनवैलिडेट हो गया तो सरकार उसके लिए एक SOP निकालेगी कि क्या वो व्यक्ति उसको दोबारा से वैलिडेट करा सकता है. अभी तो इस मामले में कोई समाचार नहीं है और पहले से बताया भी नहीं जाएगा, क्योंकि बताया जाएगा तो लोग फिर उसकी इंतजार करने लगेंगे. तो अभी तो ऐसा कोई SOP नहीं आया है कि उसके बाद पैन का क्या होगा या वो नया अप्लाई कर पाएंगे. अभी तो फिलहाल यही समझिए कि वो कयामत का दिन होगा. उस दिन बिल्कुल आपका पैन के दृष्टि से वो कयामत का दिन होगा. उस दिन सब पैन आपका खत्म हो जाएगा और बहुत दिक्कतें आ जाएंगी लोगों को. तो मेरी व्यक्तिगत रूप में भी यही सलाह है काशीनाथ जी. और काशीनाथ जी, अगर आप हमसे ये पूछ रहे हैं तो अभी तो आज हम 27 फरवरी में हैं, पूरा का पूरा मार्च पड़ा हुआ है. तो कोई ऐसा कारण है आपके पास, ये तो मैं जानना चाहूंगा. अगली बार हमें बताइएगा कि आप पूरा का पूरा महीना नहीं करा पाएंगे, कि आप 1 अप्रैल के इंतजार करें. बहरहाल चलिए, ये तो हुई हल्की फुल्की बात. बाकी आप जरूर, जो भी जिन लोगों ने नहीं कराया है, 1000 रुपए देके उसको करा ले, वरना उनके लिए वाकई इनकम टैक्स में और अन्य जगह पर बहुत दिक्कतें आने वाली है. और अगले कॉलर हैं गुरुग्राम से देवदास. देवदास जी, अपना प्रश्न पूछिए. हेलो. Looks like before Devdas, we'll go over to Kolkata, where one of our regular callers, Atanu Saha, is on the line. Atanu, welcome to the program. Please ask your question. Good evening, sir. Good evening to everybody. My sir, please explain something about Indian securities market and its next agenda and the performance of cryptocurrency in India. His first question, Anubha, was India's security market, and he wants to know what is the agenda now for the markets. Well, agenda for market, Mr. Atanu, if I say it in a very, very, summarized way,
I think the agenda right now is volatility, and there is a VI index which we assess in the market. It's called the volatility index. That index, I think we keep a very, very penetrative eye on volatility index. I think the market is going to be volatile because, the American Fed has indicated its hawkish stance, and I think the PCE, if you've seen the numbers, the personal consumption expenditure in US hasn't been very encouraging. They were expecting a fall, whereas it's come out to be very aggressive. So therefore, I think the Fed has already put its thinking caps on that probably the last hike of 25 basis points was a mistake. In the hindsight, now they think that maybe it was a mistake. We should have kept it at 50 basis points. So I think the markets are worried about that, and another 50 basis point hike in Fed in the times to come can prove to be a bit unfriendly for the market, and we are already seeing that. You've been seeing almost the last 5-6 sessions of the market have been under pressure. 7 sessions, in fact. In fact, yeah, if you go by the numbers, 7, one of them was very minor. But anyway, yeah, you're right. I mean, technically 7 sessions. So I think the markets are a bit worried. So it will take some time, Tanuji, for the markets to forget this conundrum. And I hope they come out of it. But it's going to remain volatile as far as your second question was also about cryptocurrencies. Yes. I think cryptocurrencies, RBI and the government has given very clear directions. It's not a currency, first of all. It should not be treated as a currency. Currency is only run by RBI, and I don't see any immediate bright future of cryptocurrencies in India, Mr. Tanu. So I would suggest you to keep away till government legitimizes it, and RBI has even recommended banning it. So I think when the topmost monetary policy body has recommended banning cryptocurrency, I think it is, and you've seen how it has fallen across the world, not just in India. So I would suggest you to keep away from crypto. We in Market Mantra give very interesting investment advices. Why don't you pick up any of the products that we discussed in Market Mantra? Yes. इसी बीच सिलीगुड़ी से के सहगल है अपने प्रश्न के साथ। जी हाँ, प्रश्न पूछें। हेलो। जी नमस्कार, अपना प्रश्न पूछिए। नमस्कार। There was a mention about capital gain tax exemption relating to residential houses. Is there any change in the tax system this year? No, Mr. Sehgal, in the capital gain there has been no change made. Only for big ticket properties, over 10 crores. Now you will not be able to avail benefit under Section 54. If you remember, there was Section 54 where if you sell a property and get capital gain, you can save that capital gain by investing in another property, or Section 54F by selling any other asset and buying a property. So practically, literally no change in capital gains except for this big ticket property exemption, which will not be available. And the government rightly feels that if somebody who's selling a property of 10 crores and then, buying a property worth 10 crores, I don't think this person is looking for a tax exemption. He can very well afford that. So I think it's a very targeted amendment made. But other than this minor amendment, Mr. Sehgal, no change has been made in capital gain as was being expected and speculated before. But a lot of other changes, Mr. Sehgal, have been made in taxation. Taxation is a lot more friendlier. A lot of tax to be saved there. I hope you will be availing benefit of all of that. And now we go over to Gurugram, from where Mr. Devdas has called us. Mr. Devdas, welcome to the program Market Mantra. Please ask your question. Shiro ji, namaskar. Namaskar, Devdas ji. सर, मैं ये 2 क्वेश्चन में पूछना चाहूंगा जी। हम लोग नए जानकारी लेना चाह रहे हैं। एक तो ये है कि हम लोगों की एफडी बैंक में है जी, में अभी हमारे को 7.5 रेट आया था, उसके बाद 7.25 हो गया जी। उसके आगे भी रेट बढ़ने के चांसेस हैं, क्योंकि जानकारी मिली थी कि 7.5 भी हो सकता है, 8 भी हो सकता है जनरल के लिए जी। और इसके लिए आप थोड़ा हमें राय देंगे, क्या मार्केट में क्या चल रहा है। और दूसरा सवाल ये है कि क्या गोल्ड का रेट अभी 59 से लौट के 56 वापिस आ गया 1000 जी में, ये भी आ रहा है कि 80,000 तक पहुंचने की इसकी उम्मीद है। इसके बारे में जब बताएं, क्या गोल्ड में भी हम कुछ इन्वेस्ट कर सकते हैं क्या? जी देवदास जी, बहुत अच्छे प्रश्न है। मुझे लगता है ये आम जनता के और सभी लिसनर्स के काम के प्रश्न है। जी हाँ, जहां तक बात एफडी के रेट्स का है, देखिए रिपो रेट आगे अगर बढ़ता है यहां से, हालांकि एक थॉट तो ये भी कह रहा है कि शायद यहां पॉज ले रिजर्व बैंक, क्योंकि अब महंगाई थोड़ी सी नियंत्रण में आई थी पर फिर थोड़ी सी 6.5% के आसपास चली गई। हो सकता है पॉज ले या एक छोटी सी बढ़त करी जाए। अब इसमें होता यह है कि बैंक क्या करते हैं, जब रिपो रेट बढ़ता है तो डिपॉजिट्स के रेट थोड़ा सा धीरे धीरे बढ़ाते हैं, थोड़ा सा उसमें कहीं कंजूसी कर जाते हैं या स्पीड स्लो हो जाती है सभी बैंकों के लिए, चाहे निजी हो चाहे सरकारी हो। तो हम उम्मीद करते हैं, हम तो बैंकों से निरंतर यही दरख्वास्त करते हैं कि साहब आप जब अगर इंटरेस्ट के लोन्स महंगे हो रहे हैं तो आप साथ साथ डिपॉजिटर्स को भी लाभ पहुंचाइए।
क्योंकि उनको भी फायदा हो। तो अटकलें हैं, शायद थोड़ा बहुत बढ़े यहां से, अगर रिपो रेट और बढ़ता है आगे, अगर रिपो रेट नहीं बढ़ा तो शायद बैंक्स भी डिपॉजिट्स पर भी यहां पर पॉज लें। दूसरा आपका गोल्ड का सवाल है, तो ये तो गोल्डन क्वेश्चन है। जी हाँ, ये जो आपने गिरावट देखी है हाल में 58 के करीब चला गया था, घूम के 56 के आसपास आ गया। देखिए गोल्ड में देवदास जी स्पेकुलेशन भी बहुत होती है। आप तो निवेशक हैं, आप लेके रख देते होंगे अपना लॉकर में, घर में, जहां भी, पर कुछ लोग ऐसे हैं जो दिन में कई दफे गोल्ड खरीदते बेचते हैं। ये मैं ट्रेडर्स की बात कर रहा हूं। तो उसकी वजह से बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से गोल्ड की, अभी हमने स्टॉक मार्केट्स पे भी प्रेशर देखा है, तो उसकी वजह से गोल्ड भी प्रेशर में आया है। पर हाँ, मैं लॉन्ग टर्म व्यू जो गोल्ड का है वो मैं अभी भी बहुत बुलिश हूं। आपने 80,000 की बात करी, ऐसे हम उस पर कोई नंबर नहीं डालते, पर ये मैं बहुत स्ट्रांग सलाह देता हूं लोगों को कि उनके पास अगर 1 लाख रुपया है तो उसमें से अगर आप 15% भी गोल्ड रखते हैं अपने पास, और गोल्ड को आप गोल्ड बॉन्ड्स फॉर्म में, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स रख सकते हैं। गहने वहने ना करें, गहनों में बनवाई कट जाती है, उसमें प्रॉफिट आपका नहीं हो पाता है, पर आप उसको गोल्ड कॉइन्स या ब्रिक्स या जो हॉलमार्क गोल्ड होता है उसको लेके रखें, तो आपको लॉन्ग टर्म में, लंबी अवधि के लिए, मुझे लग रहा है अगले 2 साल का मैं एक पीरियड लेके चल रहा हूं देवदास जी, आपको गोल्ड में अवश्य लाभ होगा। जब लाभ होगा तो अनुभव, हम कभी कभी लड्डू वड्डू मंगा नहीं सकते रेडियो पे, ऐसा हो जाए कि कुछ हमें मिठाई मिल जाए, जब फायदा हो जाए मार्केट मंत्र में बताए हुए टिप्स की। जी, इसी बीच बेंगलुरु से NR प्रसाद है हमारे साथ। जी हाँ, प्रश्न पूछिए। Hi, good evening. This is NR Prasad from Bangalore. Good yes, evening. Mr. Prasad, good evening. 2 questions. Yeah. Last week, 9 out of 10 companies lost 1.87 lakh crore. Yeah. And prior to that, some more damages has happened. Yeah. Addition to that, FPIs removed almost 2,300 crores. Yeah. Okay, now when the end comes, when the market, Indian market will revive. Second question is, for the third quarter, GDP posted is only 5%. Yeah. For the entire financial year 2022-23. Yeah. Talking about 6.2 to 6.5 almost. Yeah. So would India would achieve this goal with only 5% in the third quarter? Yeah. Mr. Prasad, your first question was relating to the stock markets. Yes, I think the market has been under pressure. And Anubha, while I was counting 6 sessions, Anubha corrected me. There's been 7 sessions. We try and reduce the session mentally so that, we don't feel too much bearish in the minds. But for 7 sessions in a row, we've seen pressure. Yes, you're right. 9 out of 10 companies have seen a bearish trend. I mean, the market has been under pressure, primarily because of the hawkish approach of the Fed. We just spoke about it, and the personal consumption expenditure of the US coming out, where I think there is a speculation that the Fed might hike rates, and if the Fed hikes rates, the rest of the world might follow. So inflation concerns, Mr. Prasad, haven't gone completely. So I think the market will remain under pressure for some time. It will be very volatile. We'll keep getting these mixed signals. So I think it's better. Sometimes, Anubha, I think that sometimes strategy says not investing is also a strategy. So I think for the traders, we recommend to keep away. But for investors, I think you can buy at dips. So whenever the market dips, but in an SIP form. Now this SIP need not necessarily be the mutual fund SIPs. These SIPs can be, a method of investing where you could put a little bit of money every week, every fortnight. So that is our recommendation. And as for the GDP, Mr. Prasad, I think our country is recovering very well post-COVID. IMF and World Bank have spoken very good about our country. They call it as bright spot, shining star. I mean, we got all sorts of adjectives and accolades coming from these international agencies. So therefore, I feel that India's future is bright. It may not have grown because we are also facing headwinds from world, where the world is facing recessionary kind of situation. So India is part of a global family. But I think India also is the world in itself, 1.4 billion people. I'm sure we are a consumption-driven economy. We are all going to buy goods and services, and we'll drive this economy upwards. So I think although the market, the economy might be under a little bit of pressure, but I think eventually with every quarter, Mr. Prasad, we will be getting better. Of course, the riders are that the geopolitical situation, which sometimes gets very nervous. We saw the anniversary of the Ukraine conflict when we heard America and Russia, making comments. So sometimes the geopolitical situation scares away the economic parameters. But overall, we are much better, Mr. Prasad. You can sleep much better than rest of the world. And on that bright note, the next caller is from Gurugram, Mr. S.D. Khanna. Mr. Khanna, welcome to the program. Please ask your question. Thank you.
Kohli Sahab, if the total income for a senior citizen is 8 lakh rupees, including dividend and capital gains, okay, how will be income tax treated in this case? How will the income tax treat this in this case? Mr. Khanna, for a senior citizen, as you're aware, the basic exemption limit under the old regime is 3 lakhs. And now I personally feel that for you, for the next year, new regime may work out to be better, because under the new regime, up to 7 lakhs, there is no tax. And because I don't have entire details of yours, maybe when I go into finer details, I'll be in a better position to comment. I'm also not aware of your investments, whether you're availing ATC, ATD, whether you're availing any other exemption, like housing loan and so and so. Since we don't have that detail, what I would suggest, Mr. Khanna, is that in the income tax portal, they are going to insert a calculator that for the people to make out whether they should go into the old regime or they should go into the new regime. So I would suggest that for this year, because this year the old new regime is also there. So these details, Mr. Khanna, can only be worked out. Otherwise, capital gains depends on whether you got from property or you've got from shares. If it's from shares, 112A 1 lakh exemption is there. If it's from property, section 54 benefit can be taken. 54 EC benefit can be taken. So in the absence, Mr. Khanna, of the details, it's very difficult to comment specifically what will be the tax liability. Maybe next time when you call, you can reveal some of the details if it's not confidential, and maybe I can mentally calculate immediately for you and let you know the numbers precisely. Yeah. इसी विषय खबर लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि केंद्र और कर्नाटक की डबल इंजन सरकार ने विकास के कई ऐसे कदम उठाए हैं जिनसे गरीबों, किसानों, युवा पीढ़ी, महिलाओं और बहनों को लाभ हुआ है। कर्नाटक में शिवमोगा हवाई अड्डे के उद्घाटन और विभिन्न रेल, सड़क और जलापूर्ति संबंधी परियोजनाओं की आधारशिला रखने के अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि 2014 से पहले देश में केवल 74 हवाई अड्डे थे और विमानन क्षेत्र अधर में पड़ा हुआ था। उन्होंने कहा कि अब 74 और हवाई अड्डे शुरू हैं और उड़ान कार्यक्रम के कारण लोगों के लिए हवाई चप्पल में भी हवाई उड़ान संभव हो गई है। एयर इंडिया की ओर से 500 विमानों का सौदा ये दिखाता है कि भारत में विमान क्षेत्र कितना जीवंत हो गया है। उन्होंने ये विश्वास व्यक्त किया कि आने वाले समय में भारत में निर्मित यात्री विमान आसमान में उड़ान भरेंगे और देश में छोटे और बड़े शहरों को आपस में जोड़ेंगे। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि शिवमोगा मन्नत क्षेत्र का प्रवेश द्वार है। यह प्राकृतिक संपदा और समृद्ध संस्कृति से भरपूर है। Moving on, the two-day inception meeting of W20 or Women 20, an official engagement group under the G20, was inaugurated by Union Minister for Women and Child Development, Smriti Zubin Irani, at Chhatrapati Sambhajinagar in Maharashtra today. Addressing the inaugural session, Mrs. Irani said that W20 will give guidance on how to use the best practices for increased women's empowerment. Speaking on the occasion, Sherpa of the G20 group of Indian Presidency, Amitabh Kant, said India has made women-led development a very integral part of the G20 presidency for the growth and greater prosperity of women. स्टॉक की बात करें तो मिले जुले वैश्विक संकेतों के बीच सेंसेक्स और निफ्टी आज गिरावट के साथ बंद हुए हैं। बंबई शेयर बाजार का सूचकांक सेंसेक्स 59,300 अंक से नीचे बंद हुआ। निफ्टी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज 17,400 के स्तर से नीचे बंद हुआ। सेंसेक्स 176 अंक यानी 0.30% गिरकर 59,288 पर बंद हुआ। निफ्टी 73 अंक यानी 0.42% गिरकर 17,392 पर बंद हुआ। बीएसई के मिड कैप सूचकांक में 0.69% और स्मॉल कैप सूचकांक में 1.28% की गिरावट दर्ज की गई। The Sensex and the Nifty today closed with losses. The index of the top 30 companies at the Bombay Stock Exchange, the Sensex, ended below the 59,300 mark. The Nifty, which is the index of top 50 companies at the National Stock Exchange, settled below the 17,400 level. Both the indices declined amid mixed global cues. The Sensex dropped 176 points or 0.30% to end at 59,288. The Nifty 50 fell 73 points or 0.42% to close at 17,393. In the broader market at the BSE, the mid-cap index declined 0.69% and the small-cap index fell 1.28%. In the Sensex pack, 11 companies posted gains while 19 witnessed losses. Power Grid and HDFC Bank were the top gainers as both rose 2% each, followed by Kotak Bank gaining 1.7% and SBI added 1.3%.
On the other hand, Tata Steel slipped 3.4% and Infosys declined 2.7%. Tata Motors lost 2.3% and TCS ended 2% down. In sectoral indices at the BSE, 16 sectors logged losses while 4 posted gains. The realty sector surged 2.2%, BankX index rose 1.1% and financial sector gained 0.6%. On the other hand, both tech and IT sectors tumbled 2% each, commodities declined 1.8% and telecom sector fell 1.6%. The overall breadth of the BSE trade was negative as shares of 956 companies gained while 2,593 fell. Shares of 186 companies remained unchanged. इधर अधिकांश एशियाई शेयर आज नकारात्मक क्षेत्र में बंद हुए। जापान का निक्केई 0.1% गिरा, जबकि हांगकांग का हैंग सेंग और चीन का शंघाई कंपोजिट सूचकांक 0.3% नीचे आया। सिंगापुर का स्ट्रेस टाइम्स 0.6% और दक्षिण कोरिया का कोस्पी 0.9% नीचे रहा। हालांकि दिन के कारोबार में यूरोपीय शेयर बाजारों में तेजी रही। अंतिम समाचार मिलने तक लंदन का फुट्सी 0.8%, जर्मनी का डैक्स 1.5% और फ्रांस का कैक 1.6% मजबूती के साथ कारोबार कर रहे थे। And after these, some of these economic and business world news, let's move on to our next caller who is calling us from Delhi, Gautam Saxena. Mr. Saxena, welcome to the program. Please ask your question. Thank you very much. सभी को मेरा नमस्कार। शरद जी, एक छोटा सा क्वेश्चन है। अभी मैंने एक होम लोन लेने की कोशिश करी जी, प्रॉपर्टी है, लेकिन जब ये टाइटल सर्च करते हैं बैंक वाले तो इनको एक सिमिलर एड्रेस मिला, जिसकी वजह से इन्होंने सर्टिफाइड कॉपी चेक करने की कोशिश करी। नाउ द सर्टिफाइड कॉपी इज ऑल्सो शोइंग द सेम एड्रेस, बट दे आर नॉट लुकिंग इनटू द अलॉटमेंट नंबर एंड ऑल दोज थिंग्स, ड्यू टू विच दे आर नॉट प्रोग्रेसिंग विद माई लोन। मैंने इनकी सीनियर अथॉरिटीज को भी मेल करी, कंप्लेन करी, लेकिन वहां से भी सिंपल रिस्पॉन्स आया, कोई रेजोल्यूशन नहीं निकला। तो आरबीआई ओम्बड्समैन में मैंने कंप्लेन डाली जी। कुछ उम्मीद है कि यहाँ से कोई रेजोल्यूशन मिल पाएगा, बिकॉज मेरा अच्छा खासा पैसा फंसा भी हुआ है, बिकॉज ऑन द कंफर्मेशन ऑफ बैंक ओनली मैंने रिमेनिंग पेमेंट अपने सैलरी को कर दी। काइंडली गाइड। थैंक यू वेरी मच। गौतम, हमें बहुत खेद है आपको इतनी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है लोन से संबंधित। हो सकता है कहीं पर कोई टेक्निकल फ्लॉ रहा हो इनकी वेरिफिकेशन में, तो आपने आरबीआई ओम्बड्समैन को डाला है, उसका कुछ समय इंतजार करिए वहां, क्योंकि वो लोग बैक एंड पे जाके सारा मालूमात करते हैं और इन्वेस्टिगेट करते हैं और तब वो जवाब देते हैं। तो कुछ टाइम आप उसका इंतजार करिए, पर मैं आपको ये भी सलाह दूंगा आप एक प्लान बी भी तैयार रखें, क्योंकि मुझे नहीं पता जिस बैंक को आपने अप्रोच किया है वो कितना एफिशिएंट है या नहीं, हम यहाँ नाम नहीं लेते। तो आप एक प्लान भी रखिए कि आप, क्योंकि आजकल तो हाउसिंग लोन की गौतम बहुत सारी एजेंसीज हैं, तो मैं आपको सलाह दूंगा कि ज्यादा टाइम जाया ना करके आप एक प्लान भी, मतलब किसी और बैंक के पास भी एप्लीकेशन लगा के तैयार रखें। अगर यहां से नहीं हो पाया तो कहीं और से हो जाएगा। बहुत सारी एनबीएफसीज भी हैं, दूसरे बैंक, निजी बैंक भी हैं, सरकारी बैंक भी हैं, तो आपको और ऑप्शंस भी ओपन रखनी चाहिए। फिलहाल ओम्बड्समैन की जब शिकायत का निवारण होगा उसका भी आप इंतजार करें, हो सकता है वहीं से ही सोल्यूशन निकल जाए। पर हमें बहुत खेद है, हम उम्मीद करेंगे कि आपका लोन प्रोसेस हो, आप अपने घर में जल्दी मूव करें और हाउस वार्मिंग पार्टी भी करें। और पता नहीं हमें तो बुलाते हैं नहीं बुलाते हैं, पर हाउस वार्मिंग पार्टी आप करेंगे तो हमें खुशी बहुत होगी। Moving on to some commodity news, oil prices rose today as Russia halted exports to Poland via a key pipeline. The increase comes ahead of a hefty supply cut announced for March, but a stronger dollar and fears of recession capped gains. In intraday trade, Brent crude was trading at $83 per barrel, while the WTI crude price was at $76.25 per barrel. मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज में अप्रैल अनुबंधों के लिए सोने की कीमत में आज 85 रुपए की गिरावट आई। सोना 55,350 रुपए प्रति 10 ग्राम पर कारोबार कर रहा था। अंतिम समाचार मिलने तक चांदी 117 रुपए घटकर 63,315 रुपए प्रति किलोग्राम पर कारोबार कर रही थी। And we have now come to the last minute of our program, in fact. So thank you so much, Mr. Kohli, for coming to the studio and giving your invaluable advice to our listeners. My pleasure. Dhanyavad. Thank you. And before we close, a reminder of the headlines. Prime Minister Narendra Modi stresses on good governance for success of government schemes to reach the last mile, inaugurates Shivamogga Airport and lays foundation of multiple development projects in Karnataka. Two-day inception meeting of W20 engagement group under India's G20 presidency begins in Maharashtra, and domestic stocks witness losses amid mixed global cues. Sensex closes below the 59,300 mark. Nifty settles below the 17,400 level. And that's it in this edition of Market Mantra. With all of us from the studio, Namaskar. Namaskar.
Market Mantra.